Assalamu alaikum friends. This is microbiology series third, sorry, under history and scope. This is the topic history and scope. So I hope it is clearly visible and I am clearly audible to all of you. I just have made the structure of the prokaryotic and eukaryotic cell, prokaryotic and eukaryotic cell structure. These are visible on the board. I hope you just see it clearly and it is visible and audible. I am audible to you. So this is series third. In the previous lecture, these two terms, prokaryotic and eukaryotic cells, when the scientists and researchers just used the higher microscopes like the electron microscopy or scanning electron microscopy or transmission electron microscopy, they clearly visualize the cells in with detailed structure. So the microbial taxonomists, they studied these prokaryotic and eukaryotic cells in detail using electron microscopy, which in the earlier stages or in earlier years, which was not possible to clearly visible or to clearly observe these two types of cells. Okay, in fact, prokaryotes were first living cells on earth almost a billion years ago. So this is an eukaryotic cell and this is an prokaryotic cell. Before going to the classification of the microorganisms used by the microbial taxonomists or under the microbial taxonomy, before going to that, first we must understand eukaryotic and prokaryotic cells. In the earlier video, in the previous lecture, I just told you that the floor plans, closed floor plan or open floor plan, with the advancement of the microscopes, when the researchers and microbial taxonomists, they studied these two types of cells, eukaryotic and prokaryotic cells, they came to the conclusion that there is an open floor plan found in prokaryotic cell and a closed floor plan in eukaryotic cell. As I told you in the example, like you are going to make a building, okay, you are going to make your house. In that house, you are making or designing different sets of rooms: dining hall, study room, washroom, kitchen, etc. Likewise, the same way in the eukaryotic cells, there is compartmentalization. I'm sorry. I'm sorry, there was a problem issue with the stand, mobile stand, and the camera got off. So what I was saying that there is compartmentalization in the eukaryotic cell, not in the prokaryotic cell. So compartmentalization means membrane bound organelles. Membrane bound organelles are found in eukaryotic cells and not in prokaryotic cells. So in the prokaryotic cells, scientists said that there in the prokaryotic cells, here this is an example of the prokaryotic cell. It is a bacterium here. Okay, so here no compartmentalization in this prokaryotic cell, no membrane bound organelle is found. Okay, in the eukaryotic cell, membrane bound organelles are found. There is compartmentalization like
like the building, the house you live in, you make different sets of rooms with different kind of work. There is division of labor also. Okay, so this is kitchen, that is dining hall, this is study room, that is somewhat other rooms also. Okay, so there are membrane. So just like the same way, this is found in eukaryotic cell. So what scientists and researchers said, that they said in the eukaryotic cell there is closed floor plan, and in the prokaryotic cell there is open floor plan. So now this is a bacterium here. If you go to see that this is a prokaryotic cell, this is a bacterium here, this is a capsule, this outer portion, this is a capsule, this long thread, this is flagella. In the later coming lecture, inshallah, you will come to know every and each detail about these terms, like flagella, like capsule. Okay, this is capsule, the outermost shell of this bacterium, this is capsule. And capsule का काम क्या होता है? Capsule's work is only, its function is only in the adverse conditions like dormancy or adverse environmental conditions. It helps this bacterium to go dormant or to survive its spores. Okay, like the same way. So it is just an example. So these here is like, these are villi. Okay, here is like, these are the villi or fimri, you may say. So this next here, this is the cell wall made up of chitin or peptidoglycan layer. So peptidoglycans or chitin molecules, this makes the cell wall. Then this is the lipid bilayer membrane or plasma membrane made up of lipid bilayer. Okay, this is plasma membrane or cell membrane. And then this is cytoplasm. And in the both of cytoplasm or within the cytoplasm, there is the genetic material. Genetic material is there. This is nucleoid. Because in this prokaryotic cell, here in this bacterium, there is no true nucleus. There is no true nucleus. There is no nuclear membrane found. No nuclear membrane. This is nucleoid. Genetic material here may be, for example, here suppose DNA. Okay, here is in this bacterium there is genetic material. It is not virus. Okay, here DNA. Okay, if it may be a virus, in certain viruses there are RNAs, in some there are DNAs. This is nucleoid DNA here. It is imperfect. Okay, it is just circular, in a circular way, this DNA, but in eukaryotes it is linear. In prokaryotes it is circular, and this is nucleoid, this is DNA, genetic material. Here no compartmentalization, no membrane bound organelle, no nuclear membrane. Nuclear membrane absent. Nuclear membrane absent. No nuclear membrane here. Okay, these small ribosomes are smaller as compared to eukaryotic cell. They are much complex and comparatively larger as compared to prokaryotic cells. But in prokaryotes, it is ribosomes are there but smaller and spherical in shape. So this is the genetic material, this is the DNA, and this is the nucleoid here, and this is the cytoplasm. Okay, these are the ribosomes. So this is somewhat about the prokaryotic cell. The genetic material is not bound within a membrane. It is not membrane enclosed. There is no nuclear membrane around the genetic material. It lies within the cytoplasm, like it is submerged in the cytoplasm. Okay. Now coming back to this prokaryotic cell, this eukaryotic cell. Eukaryotic, it is a Greek word, you meaning true. Karyon means nucleus or nut or kernel. So true nucleus. True nucleus is found because nucleus here, it is nucleus, and this is nucleoid and this is the genetic material DNA here, but it is enclosed within a membrane. It is enclosed. Membrane bound organelles are present like mitochondria, which is absent in prokaryotes, but in eukaryotes mitochondria is present, and in prokaryotes mitochondria is absent. Mitochondria, this is a cell organelle,
it is a power source, okay, for the cell. So this is the mitochondria. This is Golgi apparatus. Golgi apparatus. Golgi apparatus, it is absent in prokaryotes, but in eukaryotes this is also cell membrane bound. Mitochondria, lysosome here, this is the ribosome, okay, ribosome, lysosome. So membrane bound organelles are found in eukaryotic cells. So this is a eukaryotic cell, this is the cytoplasm here, this is the cross section, this is the cross section of the eukaryotic cell. इन फ्रोजन सेल माइक्रोस्कोपी में हम ऐसा करते हैं, तो फ्रोजन जो माइक्रोस्कोपी होती है वहाँ पे हम फ्रीज फैचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू इनको क्रॉस सेक्शन करके साइंटिस्ट ने डिटेल निकाली। तो इस डिटेल्ड स्ट्रक्चर, जो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर आया, इसने फिर लेड किया साइंटिस्ट को एक क्लासिफिकेशन स्कीम टू डेवलप ए क्लासिफिकेशन. These developments or these observations led to the development of a classification scheme which classifies organisms into 5 kingdoms. Okay, there are 5 kingdoms. Okay, so this is about prokaryotes and eukaryotes, but we will see the differences. Okay, we will tabulate a table here, we will make a table here. I am going to rub it. I hope you are getting my point, what I am trying to say. This prokaryotic cell and eukaryotic cell, we may write here prokaryotic cell and eukaryotic cell. Eukaryotic sorry, I just want to bring one more cleaning piece of cloth here. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell simple and smaller. Eukaryotic cell complex and comparatively larger or bigger. Bigger in size. Number 2, simple and smaller, complex and comparatively bigger in size. Eukaryotic cell, prokaryotic cell, simple and smaller. True nucleus or nucleus, true nucleus absent, or we can say no nuclear membrane. But in prokaryotic cell, this is the second difference. In prokaryotic cell, true nucleus absent or no nuclear membrane. In eukaryotic cell, true nucleus present. True nucleus present or nuclear membrane or with nuclear membrane. Number 3, here in prokaryotic cell, no mitochondria or mitochondria here absent in prokaryotic cell. In eukaryotic cell, mitochondria present. Mitochondria present in eukaryotic cell and mitochondria absent in prokaryotic cell. Right? Ribosomes
ribosomes smaller, ribosomes present in prokaryotes smaller, and ribosomes also present in eukaryotes comparatively larger. Number 5, Golgi apparatus absent in prokaryotes, and Golgi apparatus absent in prokaryotes, and Golgi apparatus present in Golgi apparatus, GAPP. Now this is the short. In short, I write GAPP, Golgi apparatus present in eukaryotes. Okay, I am fixing the light. The light of the stand got off. I'm sorry. Difference 6. ये हमने प्रोकैरियोट्स की डिफरेंसेस एंड साइड में यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंसेस. ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आया. ठीक, अब जो ये है मतलब रिप्रोडक्शन, इसमें जो डिवीजन है, सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन. In the later videos we will study in detail what is binary fission. Okay, as one cell gets divided into two daughter cells, those get divided into 4. Okay, some likewise this further 2. Okay, 2, 4, 8, 16. This is binary fission, cell division in prokaryotes, binary fission, and cell division in eukaryotes. It is mitosis. Cell division, eukaryotic cell, mitotic divisions are there, or in germline cells. I may come in later videos. The germline cells, those are the germ cells in the test found in the gametophyte. जो gametic cells है, जैसे टेस्टिस में जो है या ओवरीज में जो है, उनका जो ये है मतलब वो मियोसिस करते हैं, वो लेटर ऑन देखेंगे हम. बट यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ये माइटोसिस के थ्रू they divide through mitosis, and in the prokaryotic cells they divide through the binary fission. And 7, अगर हम 7वीं डिफरेंस देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, सेल डिवीजन, जो इसका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction in prokaryotes, and in eukaryotic cells both asexual and sexual modes have been found. So अब रिसर्चर्स ने जो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स इन सेल्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का देखा with the help of electron microscopy. Researchers and scientists or microbial taxonomists, when they studied the detailed structure of these what we call as the prokaryotic cells and eukaryotic cells, they came to a conclusion to develop those observations led to the development of a classification scheme. Those observations by microbial taxonomists that helped in microbial taxonomy to classify the microorganisms or to classify the organisms. So those led to the development of a classification scheme to classify organisms, or there is a diversity of not only animal kingdoms or plant kingdoms, there is also diversity in microbial world. Okay, so before we go to there just I just want to rub it here. Now see, so these observations led to the development of a classification scheme. Okay, and researchers classified organisms
into 5 kingdoms, into 5 kingdoms, 5 kingdom classification, 5 kingdom classification. क्लासिफिकेशन हम क्यों करेंगे? क्लासिफिकेशन किस लिए है? Because it we classify, like if it is here is an example of a shopkeeper. Here is a shopkeeper, or you are a shopkeeper, okay? You have a lot of items in your shop. Suppose there is a lot number 2 soaps. Suppose here is a shop, this is lot number 2 soaps, lot number 1 biscuits, soaps, detergents, okay? Lot number 3 detergents. क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम? अगर ये शॉपकीपर है, अगर इसके पास सोप्स लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 1 बिस्किट्स है, लॉट नंबर 3 डिटर्जेंट्स है, अगर ये शॉपकीपर इनको रैंडमली ऐसे ही रखेगा, हैफाजर्डली ऐसे ही रखेगा अपने शॉप में, तो इफ यू मे गो to that shopkeeper, if I may go to this shopkeeper and tell him that I just need that packet of detergent, or I just need that kind of soap, or I just need that thing, so it becomes cumbersome and it becomes very chaotic. There is chaos because chaotic बन जाता है, chaotic बन जाता है क्योंकि इसको मतलब टाइम लगेगा वो ढूंढने में, निकालने में टाइम वेस्ट होगा, और वो लॉट नंबर सही से मतलब नहीं निकाल पाएगा कि कौन सा कहाँ पे है, तो एक्सपायरी किसका डेट हुआ है, किसका नहीं हुआ है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स मुतासर होंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इसलिए ये शॉपकीपर इन आइटम्स को क्लासिफाई करेगा, इन आइटम्स को क्लासिफाई करेगा. सोप्स अलग लॉट में रखेगा, डिटर्जेंट्स अलग जगह पे रखेगा, बिस्किट्स अलग जगह पे रखेगा, सो दैट इट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर हिम एंड इजी फॉर हिम टू रिट्रीव दीज प्रोडक्ट्स एंड गिव इट टू द कस्टमर. अगर इसके पास कस्टमर आया, फलानी सोप मुझे चाहिए, डेटॉल सोप और वॉशिंग सोप, वॉशिंग यूटेंसिल सोप, दैट इज अलग, बर्तन की साबुन अलग होती है, हाथ धोने की अलग होती है, बहुत सारे किस्म है ना सोप्स में भी. तो इस शॉपकीपर को इजी होता है ये फाइंड आउट करने में, इसलिए हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं, ताकि हम इनको जब एक ग्रुप में रखते हैं ऑर्गेनिज्म्स को, सपोज दिस इज किंगडम, दिस इज क्लास, ऑर्डर, लाइकवाइज, सो इट बिकम्स इजी फॉर रिसर्चर्स टू जस्ट पिक अप द वन इंडिविजुअल, स्टडी दैट इंडिविजुअल, एंड जो उसके ग्रुप में, उस फैमिली में जो बाकी मेंबर्स होंगे उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक. So, like the same way, they came to the conclusion to develop the classification scheme. Classification scheme जो इन्होंने दी, 5 kingdom classification जो पहले आई, ठीक, like 1, इसमें पहली मुनीरा, सेकंड प्रोटिस्टा, ठीक. जो ये 5 kingdom classification है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, ठीक, फंजाई, एक सेकंड, किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक. अब हम अगर यहां पे 4th वन लिखेंगे, एनिमेलिया, Planti. I'm sorry, this the light of this stand, it is just very bright, so there is a problem with the eyes. So this is the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, kingdom Planti, right? साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इन फर्स्ट 3 किंगडम्स में डाला. ठीक. Microbial classification, for microbial classification, the microbial taxonomists, they grouped microorganisms, or they divided them into they put them into first 3 kingdoms, Monera, Protista, Fungi, okay, except viruses and other acellular infectious agents, viruses and other acellular infection agents like the viroids, satellites, prions, they have their own, or viruses, they have their own system of classification. But
साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन्होंने जो ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, द सेल्स विद प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, दे पुट देम इन द किंगडम मोनिरा, इन द किंगडम मोनिरा। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने इसको किंगडम मोनिरा में मतलब पुट किया। फिर जब लेटर डेवलपमेंट्स आई, लेटर माइक्रोबियल टैक्सोनॉमिस्ट जब आए, उन्होंने जब फर्दर डेवलपमेंट जो हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में और सम अदर लाइक बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो जब उसमें डेवलपमेंट हुई तो साइंटिस्ट्स केम टू द कंक्लूजन दैट दैट गेव ब्लो टू दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए उसने ब्लो किया, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जो था, स्ट्रक्चर्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, दे वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनिरा, दे वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनिरा। देन इट वाज फाउंड दैट द कोहेसिव यूनिट, टैक्सोनॉमिक यूनिट प्रोटिस्टा हियर। ओके, जो ये यूनिट है प्रोटिस्टा, तो इसमें देखा गया कि जो मतलब ये प्रोटिस्टा है, इसमें ये एक कोहेसिव टैक्सॉन नहीं है, ये एक कोहेसिव टैक्सॉन नहीं है। दिस इज नॉट ए कोहेसिव टैक्सॉन, दिस वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया। पहले ये इसमें बैक्टीरिया एंड आर्किया दे वर प्लेस्ड इन द सेम, मतलब ये तो एक ही ग्रुप था प्रोटिस्टा, बट जब फर्दर एडवांसमेंट हुई, फर्दर स्टडी जब हुआ, डेवलपमेंट जब हुई, तो इन्होंने इसको बैक्टीरिया एंड आर्किया को इन्होंने जब देखा कि प्रोटिस्टा कोहेसिव टैक्सॉन नहीं है, इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया बैक्टीरिया एंड आर्किया में। ठीक, तो फिर जब फर्दर जब कार्ल वूज इन 1970s जब आया, उसने राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस प्रोटीन्स की और राइबोसोमल आरआरएनए सीक्वेंसेस जब उसने की 1970s में कार्ल वूज ने, तो उसने क्या बोला कि जो ये मतलब उसने जब राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस किए, तो कार्ल वूज ने क्या बोला, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग दिस टाइम, उसने बोला कि मतलब जो ये बैक्टीरिया है, ठीक, ये जो बैक्टीरिया है, एक सेकंड, हाँ, इसने राइबोसोमल आरआरएनए सीक्वेंसेस, जब राइबोसोमल आरआरएनए सीक्वेंसेस इसने कार्ल वूज ने जब निकाली न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स, तो उसने क्या फाउंड किया, उसने बोला कि दैट गिव ब्लो टू दिस फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन के लिए उसने ब्लो किया, उसने बोला दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्री डोमेन्स। ओके, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ that led to the development of three classification scheme। उसने देखा कि जो ये बैक्टीरिया है, ठीक, एंड आर्किया, तो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंसेस, जीनोमिक सीक्वेंसेस जब उसने की, उसने बोला इनमें थोड़ा आरआरएनए सीक्वेंसेस में इसमें डिफरेंसेस आई। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि फिर माइक्रोबियल जो टैक्सोनॉमिस्ट्स आए, उन्होंने फिर दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन क्लासिफिकेशन स्कीम, दैट इज थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री domains here, bacteria, archaea and eukarya। ये क्लासिफिकेशन स्कीम जो आई, ठीक, और राइट, ठीक, आई वाज जस्ट सो जो ये थ्री डोमेन्स है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया, ठीक, अगर हम ऑरिजिन बोलेंगे, दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द आर्किया, दिस इज द यूकेरिया। सो थ्री डोमेन्स, इस क्लासिफिकेशन स्कीम ने बोला थ्री डोमेन्स है, राइट, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। ओके, नाउ
this is all about, this was based on the ribosomal ribosomal RNA nucleic acid sequences and proteins. So this classification scheme later developed by the scientists, 3 domains and eukarya. 3 domains: bacteria, archaea and eukarya. I hope you enjoyed well. In the next coming series, there will be other lecture regarding these 3 in detail. Thank you for watching.